से एक क्लू मिल रहा है, दूसरी साइड से दूसरा क्लू मिल रहा है, and this both put together, the child has to apply logic and solve the problem. One simple game rule है इसमें कि at the time of solving they have to follow the Sudoku rule. What is the Sudoku rule? That no color will be in the same line or no model of the car will be in the same line or the road. बहुत simple है. We'll solve the first one, you'll understand. Okay, so first I'll take out all the actual tokens. Now on the left hand side, I'm seeing a white beetle. I'll take the white beetle and I'll put it on top. A sports car, an SUV in these positions. Then I'm seeing a sports car, an SUV, and a beetle in these positions. And then I'm seeing a sports car at the bottom. मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल का जो पार्किंग चैलेंज है उसमें मैंने मॉडल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं. अभी मैं सेकंड बुक में से फर्स्ट एग्जाम्पल का ही मैं कलर्स आइडेंटिफाई. तो फर्स्ट पोजीशन पे ग्रीन है, सेकंड पे रेड है, थर्ड पे ब्लू है. Similarly over here I have a blue, I have a red over here, I have a blue over here, and I have a green. Now if you look at this example, बच्चे को तो डिडक्शन करना है. यार मेरे को तो मिल गया, चलो यहाँ पे तो ग्रीन बीटल ही आने वाला, because there is a beetle and there is a green color identified. Problem solved. I'll take a green beetle and I will replace it. Secondly, I have a red color sports car here. Simple. I'll pick up, identify the red color sports car and put it. A blue SUV. Okay. Then I have a blue sports car here. Now I don't have the colors here. I will wait. A green sports car here. I have quickly replaced it. Now the challenge begins for the child. Now they have to use logic. यार ये गेम का रूल क्या था? सुडोकू रूल है, right? So over here if I have a beetle, if I have a sports car, अरे naturally यहाँ पे तो SUV ही जाएगा ना. कलर भी दिया हुआ है. I have a red SUV left. I put this here and replace this. I solve this problem. Similarly over here, I will say, okay, यहाँ पे तो रेड कलर ही बाकी है और यहाँ पे मुझे बीटल दिखाया है. I will take a red beetle and replace it. ठीक है. Then I have only a blue and a green. यहाँ पे blue color तो है ही. I will replace it and I will replace the last one. Now for a 5-year-old to deduct this, ये deduction करना है उसको, उसके लिए it is very very challenging. The first example, it is very very easy, but as you go forward, I am 100% sure that quite a few people will find it even more challenging. Like example number 13, we will take one more example because this is a very very good product and the concept is also brilliant, right? So over here, I'm having a sports car on the top. I'm having a beetle and I'm having an SUV. And then I'm having a sports car at this stage. Now for the same example, I'm having a green color car here, a blue color car here, a red color car here, and a green color car. बस इतना ही क्लू दिया होगा. अभी आप सोचो ये 5 साल के बच्चे के लिए it is so difficult for them to figure out and solve this and challenging. Of course, some parents advise and as a group think a family can also play this game. So quickly solving this, मुझे तो पता है यहाँ पे रेड कलर की बीटल आएगी. I'm going to quickly replace and put the red beetle. Now over here, I know that there will be a green SUV, right? I will take the green SUV and I will replace it here. By logic, for a child, it is difficult, but as adults, we know कि यहाँ पे green आ गया, red आ गया, तो यहाँ पे blue color की भी sports car होगी, right? So this is deduction. When I say deduction is very, very, very challenging. Okay. Now in this one, in this row, I have 2 clues. I have a blue color car here, but model is not here. And I have a model here where the color is not here. But by logic, यहाँ पे red है, यहाँ पे blue है, तो यहाँ पे green ही आएगा. Correct? So this is a sports car. So I will take a green sports car and replace it. Now ये particular row में क्या बचा है? I have a blue color car and SUV is missing.
तो मैं क्विकली क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से ये रिप्लेस करूँ. करेक्ट, चैलेंजिंग, राइट? In the last row, if you see, I have a blue car here, I have a blue car here, but I don't have a blue car here. I have a blue car here, I have a blue car here, I don't have a blue car. तो यही एक पोजीशन में ब्लू कार का टोकन मिसिंग है. ये लॉजिक बच्चे को लगाना है, राइट? और मेरे पास ब्लू का एक ही टोकन बचा हो. सो बाय लॉजिक दिस गोes here. Similarly, I have only one green car left, so I will quickly replace it. And again, using the Sudoku logic, this sports car cannot come here because there is a sports car here also and here also. So by logic, this will go here, and by logic, this will go here. Challenging? Can I get some feedback on this product? किसी को डाउट्स है ये प्रोडक्ट में, समझ में नहीं आया? We can do one more example. No, sir. Is it clear? No, sir. It's clear. Yeah, it is clear, sir. It is Quite clear. ये प्रोडक्ट आपने अपने शॉप में देखा हुआ है, स्टोर में देखा हुआ है ये? Have you seen parking lot in your store? You know what No, sir. Yeah, the problem, I'll tell you where the problem is. Hmm. The problem is because the product is so compact size में, right? कि VM में ये कहाँ पे चले जाता है प्रोडक्ट पता ही नहीं चलता. माल कब आया, कब पीछे स्टॉक में चले गया, कोई प्रोडक्ट के पीछे चले गए तब भी पता नहीं चलता. So I would request every person who is present over here to look for these products in your store and explain it to your colleagues who were, not been able to attend this session, because these are very interesting. Do you think this is interesting? These type of products are interesting for a child in the age? Yes, of course. Yeah, Amir has also written Yes. that quite challenging and yet interesting as well. Yes, and look at the price points. These are meant for the Indian markets mass. So I don't see if the products are visible and there is a product knowledge also. 2-3 piece per customer तो कहीं नहीं है, right? So we have just about 3 products left now. I'll quickly take you through the next one. Yes. Right? So this product is called Tetrix. This is also a tile puzzle. जैसे हम लोगों ने पहले टांगराम खेला था, या तो फिर मोज़ाइक पिक्चर्स खेला था. These are all tile puzzles. Even this is a tile puzzle. Tetris काफी लोगों ने फोन पे खेलते हैं आप लोग, right? ये ऊपर से ऐसे pieces गिरते हैं, you try to arrange them in the right spots. Yes, sir. Get the rows clear and get goodie points, right? So this concept for a 5-6 year old is very challenging. How? Right? Firstly, the product design is in such a way. First of all, the introduction to the piece itself, right? Tetris. The word Tetris is derived from the word tetromino, the geometric word tetromino. What is a tetromino? कोई बता सकता है मुझे? नहीं बता सकता. No problem. So a monomino in geometric terms it is called a perfect square. एक स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं मोनोमिनो, राइट? 2 स्क्वायर ज्वाइन करते हैं तो हम बोलते हैं डोमिनो. डोमिनो पिज्जा का लोगो तो सबको याद है. There are 2 squares, red and yellow, or sorry, red and blue. Yes, Right. sir. Right, so that's a domino. 3 pieces of square join किए हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइमिनो. Okay, but when 4 squares are joined, it is called tetramino. So this game or the Tetris game is derived from the word tetramino, where there are 4 squares. Can you see 1, 2, 3, and 4 squares are there? Now these 4 squares can have only a few geometrical shapes. Like एक टेट्रामिनो सारे 4 के 4 pieces एक line में आ गए. They can form a T, like what I just showed you. They can form a Z, like this one. Okay, then they can form a square formation, like 4 square को center से join कर दिया तो I get 4. Then there's an L tetramino, like this one.
So this is a mirror one. So you get both the sides. We have a left and a right tetramino, like this one, mirror images. So this is called an L tetramino. Okay. So ये सबके axis of symmetry जो है, अगेन जो मैंने पहले बताया था, फॉर अ 5 or 6 year old जिनको ज्योमेट्री में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, ये प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है. सो आइसोमेट्रिक पीसेस हैं इसमें, काफी पीसेस हैं. I'll quickly take you through the example number 1, तो आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ क्या है. Right? So first of all the formations of the tetramino in all the colors that are put in the pack are available. Okay. अब हमने क्या किया है, मैं सारे पीसेस निकाल देता हूँ. These are very strong magnets because ये पीसेस पतले हैं, इसलिए इसमें मैग्नेट का पावर बहुत ज्यादा है. This is the example. This formation I have to do using one L, which is of this shape. The second L, which is L1 and L2, mirror image Z1 and Z2. Correct? क्लू दिया हुआ है और ये क्लू सॉल्व करने के लिए कौन से 4 पीसेस यूज करने हैं ये भी दिखा. और दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड. लाइक ओके, ये 2 फिश है, बाय द वे नॉट 1 फिश, दे हैव टू फॉर्म 2 फिशेस. ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट वन, राइट? Yes, sir. Yes. Now the second one. This is my second one. Understood? Yes, sir. Very simple. यहाँ पे भी क्या किया हुआ है? There is a 2/8 का rectangle form किया हुआ है. 1 2/8 but 2/6, and there are 3 squares shown over here. तो ये तो बहुत simple है बच्चे के लिए ये करने की, right? So initially, the first examples, we are just getting the child used to all the different types of tetramino that is there. Okay, magnetic hair movement becomes very easy for a child, but as you progress, the level of difficulty is just mind-blowing. Some examples, I take at least half an hour to solve in spite of doing it over and over. So स्पेशल अरेंजमेंट्स, यहाँ से मैंने एग्जांपल को कॉपी करके मैंने टैक्टाइल मूवमेंट्स, स्लो टैक्टाइल मूवमेंट से मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देखोगे तो टेक्ट्रिक्स एंड टैंग्राम्स आर द मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. दे डू एक्सीडिंगली वेल. इसका भी पैकेजिंग जो मैंने पहले दिखाया मोज़ाइक पजल्स का, सिमिलरली इट विल हैव अ ट्रे सो दैट यू नो व्हेन द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑल द एक्स्ट्रा पीसेस कैन गो इनसाइड. तो ये जो बिखरे पड़े हैं यहाँ पे वो निकल जाएगा. एनी डाउट्स इन दिस प्रोडक्ट? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट? It is quite challenging. I would request that you know, if you want to open a piece and solve some problems, do it in your free time. It's more challenging than playing Tetris on the phone, right? So Tanvi, can we move on to the next one? Yes. Right, only 2 more products left. One of them is fairly simple and easy, so I'll take that one first, and then I'll take one of the most interesting products from our state. आपने पहले सुडोकू जूनियर देखा था जो 4x4 मैट्रिक्स का था, ट्रांसपोर्ट की थीम थी. दिस इज फॉर अ हायर एज ग्रुप. सुडोकू सीनियर, दिस इज मेंट फॉर 7 years, और इसमें फार्म की थीम है. उसमें 4x4 की मैट्रिक्स थी, इसमें 6x6 की मैट्रिक्स, राइट? अगेन दिस हैज द न्यू पैकेजिंग, bright colors. All the tokens are well sorted, well kept inside, and there are example book with challenges in, right? Or Sudoku ka concept for a 7-8 year old who cannot do 9x9 or cannot do numbers. ये फार्म की थीम उनके लिए quite encouraging और challenging है. Again, magnetic board. It's a perfect
medium for them to carry along, play on the plane, play wherever they want to. ये प्रोडक्ट देखा है आपने, बेचा है पहले? Tanvi, what is more interesting is that most of them are selling this product on the floor for more than a year now, and they have not even seen the product. Yeah. I like that parking lot. That sounds also very interesting, that product. Yeah, Parking. Parking lot, pen them up is these are very Yeah. concepts for sure. And the whole idea is like I can put it in my backpack and take it. So this brings to the last product of the day. It's called Space Combat. This is the first game where two players can actually play on the same board. Okay. So there are two games in it. One is the evergreen Brain Beta game. Brain Beta तो सभी लोगों ने खेला होगा बचपन में, वो गोटी वाला game. 81 tokens which are there. So what we have done is we have introduced that in a magnetic form. So if children want to play it on a flight, it becomes very easy for them. Brain Beta तो सबको आता है. I'm not going to take you through Brain Beta. किसी को Brain Beta में doubts है? I think you guys are selling other Brain Beta products also on the floor, so that's not a bigger thing. Anybody wants me to take Brain Beta? Take up Brain Beta? No, right? I'm not hearing any yes, so I'll not explain this product, but I'll explain this game. ठीक है, ये सोलो गेम है, ये बच्चा अकेला खेल सकता है, बट ये गेम है, ये दो जन खेल सकते हैं. This particular game is called Space Combat. अभी इसमें क्या है? There are 4 different shapes of tokens, right? There are triangles, circles, rhombus, and a square. Okay, अब दोनों के शेप में और साइज में डिफरेंस है. जो छोटा वाला है, that is a rhombus. Okay, the sides of a shape decide the movement path. ये स्क्वायर है, राइट? ये बोर्ड पे आगे पीछे मूव कर सकता है, डायगोनली मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो शेप है टोकन का, दैट डिसाइड्स द वे इट कैन मूव ऑन द बोर्ड. क्यों मूव करना है और कैसे मूव करते हैं वो बाद में, बट जस्ट अंडरस्टैंड द वे अ शेप कैन मूव. सिमिलरली अगर मैं ये काइट वाला लेता हूं तो इसका शेप कैसा है? इट इज फ्लैट ऑन द एक्सिस. तो ये साइडवेज नहीं मूव कर सकता, ये सिर्फ डायगोनली मूव कर सकता. ओके, देन द थर्ड वन इज अ ट्राइंगल. अगेन इसका शेप कैसा है? आगे से वी हैव 2 एक्सिस, so it can move sideways in the front like this, but it can move backwards also, but straight, because ये यहाँ पे इसका शेप ऐसा. ठीक है. एंड लास्ट वाला है सर्कल. अभी इसमें कोई साइड्स ही नहीं है, राइट? सो दिस कैन मूव एनीवेयर. दिस कैन मूव साइडवेज, बैकवर्ड्स, डायगोनली, कहीं भी जा सकता. अभी एम ऑफ द गेम ये है कि देयर आर 2 galaxies which are clashing in the space. Okay, and there is a race for one planet people to move to the other, and the one which moves to the other side first wins the game. अभी ये पिंक वाले टोकन्स है, इसकी स्टार्टिंग पोजीशंस ये है, उसकी एंडिंग पोजीशंस ये है. ठीक है, ग्रीन वालों का स्टार्टिंग पोजीशन ये है और एंडिंग पोजीशन ये है, राइट? So basically they are going to cross each other's path on the board, right? एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है. So they are going to cross and meet somewhere in the middle. Now इसमें चेस के जैसे कुछ एक दूसरे को मारना नहीं है, बट एक दूसरे को ब्लॉक करना. How? I just quickly, I don't have another player to play with me, but I'm just going to randomly arrange the tokens. Okay, मैंने ये starting positions में randomly arrange करना है. कैसे अरेंज करना है? आप एक प्लेयर एक रखेगा, फिर दूसरा प्लेयर अपना एक टोकन स्टार्ट पोजीशन में रखेगा, सारे पोजीशन स्टार्ट हो गए, देन वन ऑफ द प्लेयर्स गोस फर्स्ट. Now if I have to move these tokens here, I have to move in this direction, right?
तो से आई मूव दिस वन, ये खाली डायगनली मूव कर सकता है, तो मैंने स्टार्ट पोजीशन से मैं इसको बाहर लेके आया, जैसे चेस में हम लोग बाहर लेके आते हैं, मैं इसको भी बाहर लेके आया, ठीक है। देन ये स्क्वायर अपोनेंट का टोकन है, सपोजिंग इफ आई प्ले दिस टोकन, राइट, देन इसकी बारी है, सपोजिंग दिस गाय मूव्स दिस टोकन। नाउ अगर आप देखोगे तो ये टोकन मैंने जब ये मूव किया तो मेरा ऑटोमेटिकली ये तो ब्लॉक हो गया, ये टोकन जब मैंने मूव किया तो ये अब ये साइड नहीं जा सकता, बट दिस कैन गो फॉरवर्ड, लेट्स प्ले मोर, okay, then I will, as a player, I say I will move this one here, this player decides that okay I will move this one, movements में किसी को डाउट नहीं है ना, how the tokens are moving on the board, No, sir, no doubt. no doubt, right? Sir. Yeah, Yes. movements are clear, thank you for confirming that, Amit. Then say this player decides this player का इसका ही turn है, right? So say I move this one forward, this guy says okay fine, this guy is already blocked, so my staying here is not of any use, so I will move this token here, right? So see, when I move this token here, ये token block हो गया, because this token cannot move forward, this token either has to go sideways, जो उसको advantage नहीं मिल रहा है, only one move at a time, they cannot do two moves, only one move, they can move across only one grid at a time. So when I put this circle over here, आपने देखा कि ये स्क्वायर ब्लॉक हो गया, राइट, क्योंकि ये अभी इसको आगे जाना है तो ये पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे आगे जाएगा, so this is going to waste two of his moves, that is advantageous for this pink player, right? अभी इसका टर्न है, चलो मैंने बोलता हूँ मैं ये बाहर निकालता हूँ पहले, then I will say okay, since I have blocked this, I would want to block more tokens, so I will move this one. Now this player says okay fine, I'll move this one, so I can partially block this one. Then this player decides okay fine, I'll move this one, and so on and so forth. There is a lot of thinking that is happening. अभी ये block हो गया है बंदा, because I am playing with myself, so I'm not strategizing so much. But अगर ये बहुत simple play है, 10 minutes में एक game खत्म होता है, but there is for a child 7-8 years, ये काफी अच्छी strategy वाला game है. You know, like chess is so difficult for them, but this is a much simpler way of strategizing, and it is stimulating that strategy thought process. ये एक बार strategy, logical thinking, ये पूरा stimulate होता है इस type के products, right? So quickly I'll finish this game. I'll say I'll move this one here. This guy say okay fine, I'm not going to move क्योंकि ये तो block हो गया है वापस. इसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं. See, now I'm blocking this from coming out. Okay. Take this one here. मेरे ये ग्रीन वाले के दो टोकन यहाँ पे ब्लॉक हैं, so he has to do something to move fast. Otherwise वो पीछे ही रह जाएगा. I will say I will move this sideways, भले move waste हो रहा है, but at least ये तो अनब्लॉक होगा. Similarly ये बंदा यहाँ पे ब्लॉक्ड है, जब तक मैं ये नहीं मूव करता ये ब्लॉक हो गया है. Understand? Okay. Then I will take this home. मेरा पहला टोकन घर पे चले गया. Now this guy will say okay fine, finally I have got some space to move. I move this one. अब ये सोचेगा कि यार इसको तो मैंने ब्लॉक करके रखा था, अब मैं इसको फर्दर आई विल ब्लॉक, राइट? मुझे तो जाना यही साइड है, तो जब तक मैं ब्लॉक कर सकता हूँ मैं करूंगा उसको. आई विल नॉट लेट हिम मूव. So then this guy says okay fine, I'm taking this home. This guy says okay fine, I'll move this forward.
This guy is moving forward now. Guy says, okay, fine, I'll go home here. See, जाने के time भी he has to follow the rules of movement. तो ट्राइंगल है तो फ्रंट में वो डायगनली जाएगा और बैक में वो स्ट्रेट आएगा. Okay, this guy has gone home. I will say this movement is inevitable. मेरे पास कोई ज्यादा मूव नहीं बचे हैं अभी पिंक वाले के पास मूव नहीं बचे बिकॉज ये ब्लॉक है, ये दोनों घर पे चले गए तो उसको तो ये मूव करना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है. तो instead, okay, fine, I'll move this one. So now this token is clear to move forward. Okay, I've gone forward over here. The pink doesn't have any moves. He's gone home with the third token. अब मजा देखो, इनिशियल जब गेम प्ले चालू किया था तभी हमको लग रहा था कि ग्रीन हारने वाला, बहुत पीछे है वो, क्योंकि उसके एक टोकन यहाँ पे ब्लॉक था, एक टोकन यहाँ पे ब्लॉक था. बट एज द गेम फॉरवर्ड आगे बढ़ी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेइंग सम सिंपल स्ट्रैटेजीज, ये तो अभी घर के बाहर भी नहीं निकला है पिंक का, और मैंने इसको इतनी बुरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है कि ये आगे बढ़ भी नहीं रहा है. करेक्ट. तो अभी ग्रीन का टर्न है. ग्रीन को मैंने यहाँ पे पहला दिया. पिंक बोलेगा आई हैव टू मिस अ टर्न, आई डोंट हैव एनी मूव्स लेफ्ट, so he will miss a turn, right? Then again the green says, okay, fine, I'm going to go home. The green has gone forward. Again the pink cannot move unless I move this token. The pink cannot move at all. So the green goes home with this one. Then again the green plays here, the green plays here. अब pink, अभी ग्रीन के पास भी बहुत कम मूव बचे, right? So for this token to go home, he can move only diagonally, right? So वो क्या करेगा, ट्राइंगल स्ट्रेट बैकवर्ड आता है तो he will move it back, take it out one more time, and in the next move he will bring it here diagonally. Then again this goes diagonally here. The green has won the match. पिंक बेचारा जो पहले लीड कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल स्ट्रैटेजी वो ग्रीन वाले ने इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, राइट? वेरी सिंपल गेम, 10 minutes maximum a game can get over. But for a 8-year-old, 9-year-old to play with a peer, friends के साथ, parents के साथ, this is quite a challenge. How do you like the product? कोई डाउट है ये प्रोडक्ट में? Thank you, Rupail, for confirmation.